Hello everyone, welcome to my YouTube channel. So in the last video we have completed our profit and loss appropriation account based numerical problems, right? And in this video we are going to start a very new topic which is your past adjustment. ठीक है? तो आपका ये जो past adjustment है ये इतना ज़्यादा important topic है कि क्वेश्चन में इसके ऊपर एक क्वेश्चन तो एटलीस्ट आता ही है, राइट? तो आपको सबसे पहले पूरा कॉन्सेप्ट समझना है, उसके बाद हम इस कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. पास्ट एडजस्टमेंट का क्या मतलब होता है? फॉर एग्जांपल आपकी जो फर्म है, एज वी हैव लर्न, फर्म का जो मेन गोल होता है वो होता है प्रॉफिट को अर्न करना, जो फर्दर पार्टनर्स में बांटा जाता है x y z. लेट्स सपोज देयर आर 3 पार्टनर्स, राइट? सो होता क्या है कि इन दिस केस फर्म कहती है कि जो आपका प्रॉफिट है उसको ऐसे ही पार्टनर्स में बांट दिया गया है विदाउट टेकिंग इनटू कंसीडरेशन योर एडजस्टमेंट. एडजस्टमेंट कैसे हो सकती है? फॉर एग्जांपल योर आईयूसी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आपने पार्टनर्स को कैपिटल पर इंटरेस्ट नहीं दिया, राइट? उसके बाद आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, आपने पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज ही नहीं करा. आपका सैलरी and your commission and so on. ठीक है? तो इसका मतलब क्या है कि बहुत सारे ऐसे एडजस्टमेंट हमारी कंपनीज में रह जाती हैं जिसमें हमें प्रॉफिट को कंसीडर तो करना होता है लेकिन हम नहीं करते, राइट? हम लोग सिंपली क्या कर देते हैं, उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं अमंग पार्टनर्स. नाउ थिंक योरसेल्फ, वो जो प्रॉफिट पार्टनर्स में बांटा गया है क्या वो सही अमाउंट में बांटा गया है? नहीं. क्यों? क्योंकि हमने इन सब एडजस्टमेंट को कंसीडर ही नहीं करा, राइट? तो अब इस सिचुएशन में क्या होता है, हमें कंपनी बोलती है कि आपको पूरी बुक्स ऑफ अकाउंट को ऑल्टर नहीं करना है, यू जस्ट हैव टू पास आउट दी सिंगल जर्नल एंट्री, राइट? तो उस जर्नल एंट्री को पास करने के लिए हमें पास्ट एडजस्टमेंट टेबल बनाते हैं जिसके अंदर हम सब कुछ एडजस्टमेंट करते हैं और लास्ट में एक जर्नल एंट्री को पास कर देते हैं, राइट? सो आई एम गोइंग टू सॉल्व वन क्वेश्चन इन दिस वीडियो बेस्ड अपॉन द सेम सिनेरियो. So just be with me and try to grasp the entire concept, right? So let's get started with the question. Okay, so read the question with me. I'm going to put that question on the screen. After the accounts of partnership have been drawn up and the books closed off, it is discovered that the interest on capital at the rate 8% per annum as provided in the partnership agreement has been omitted to be recorded. The capital accounts at the beginning of the year stood as follows: A rupees 80,000, B rupees 40,000 and C rupees 30,000. Their profit sharing ratio was 2:1:1. Instead of altering the balance sheet, it is decided to pass the necessary adjusting entry. At the beginning of the next year, you are required to give the necessary journal entry. Right? तो आपको क्या करना है? आपको पास्ट एडजस्टमेंट टेबल बनानी है जिसका जो फॉर्मेट होता है it looks like something this. There are how many partners they have told you? They have told you 3 partners: partner A, partner B and partner C, right? A, B and C. And lastly you have to write the total. Starting with you have to write particulars. So this is the format of your past adjustment table. Now just solve the question with me. First of all, आपने क्या देना भूल गए? आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए. तो सिंपली भाई हमको देना भूल गए तो दे देते हैं टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. Now tell me, जब आप पार्टनर्स को उनकी कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट देते हो तो आप उसको क्रेडिट करते हो, राइट? तो आप क्या करोगे, ये जो कैपिटल है उसको क्रेडिट कर दोगे अमंग पार्टनर्स, राइट? तो कितनी कैपिटल है? 80,000, 40,000 एंड 30,000. इसके ऊपर आप अपना इंटरेस्ट निकालो 8% के अकॉर्डिंग एंड यू आर गेटिंग 6,400 for 80,000, 3,200 for 40,000 and for 30,000 you are getting 2,400. Total implies the total 6,400 plus 3,200 plus 2,400. You are going to write the total outside. This is it. अब ये जो 12,000 है, अब आपको ये 12,000 पार्टनर्स से लेने हैं. क्यों? क्योंकि ये पार्टनरशिप भी है. Now getting my point? क्योंकि ये सारा बिजनेस ही पार्टनरशिप के अराउंड रिवॉल्व करता है कि आपको ये जो इंटरेस्ट है वो पार्टनर्स को देना है, ठीक है? तो आप ये 12,000
रेशियो 2:1:1। सिंपली आप अपने 12,000 को 2:1:1 में डिवाइड कर दो एंड इट इज गोइंग टू बी डेबिट बिकॉज इन योर जर्नल एंट्रीज देयर आर टू साइड, योर क्रेडिट साइड एंड योर डेबिट साइड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करोगे, आप इस 12,000 को डेबिट कर दोगे ए, बी एंड सी पार्टनर्स में। सो व्हेन यू आर गोइंग टू डिवाइड दिस 12,000 इन द रेशियो 2:1:1, you are getting your 6,000, right? 3,000 and 3,000, right? Now simply you are going to balance your account, right? आपको बैलेंस निकालना है, ठीक है। 6,400 minus 600 you are getting 400, 3,200 minus 3,000 you are getting 200, 3,000 minus 2,400 you are getting 600, right? Now here comes the main trick that will explain you कि आपको जर्नल एंट्री कैसे पास करनी है, ठीक है। तो आपका ये जो बैलेंस था 6,400 ये ज्यादा था ऑन द क्रेडिट साइड, तो ये 400 आपका क्रेडिट बैलेंस बचा। दिस इज आल्सो योर क्रेडिट बैलेंस लाइकवाइज एंड इन दिस केस योर 3,000 इज ऑन द साइड ऑफ डेबिट, सो योर 3,000 इज योर डेबिट बैलेंस। So you got your credit, debit. Now to just check that your credit side is matching with debit side or not. 400 plus 600 is matching with the 600, right? अब आपको सिंपल क्या करनी है, जर्नल एंट्री पास करनी है। जर्नल एंट्री कैसे पास करते हो, जो डेबिट है उसको डेबिट कर दो, तो जो पार्टनर्स क्रेडिट है उनको क्रेडिट कर दो। कितना है 600, 400 and 200। तो आपको ये करना होता है इन क्वेश्चन, ठीक है। आपने क्या करा, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को ऑर्डर भी नहीं करा, दोबारा से प्रॉफिट एंड लॉस नहीं बनाया, दोबारा से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नहीं बनाया। आपने सिंपल क्या बनाया, एडजस्टमेंट टेबल बना दी और इस एडजस्टमेंट टेबल से आपने ये अपनी जर्नल एंट्री को पास कर दिया, जो क्या दिखाता है कि हमारा जो बैलेंस अमाउंट है वो क्या होगा, जो सी है वो 600 रुपीस देगा, 400 टू ए को और 200 टू बी। सो दिस इज योर एंटायर कॉन्सेप्ट। So this is it for this video. Now I'll see you in the next video from where we will do the complete full-fledged question of past adjustment, right? So see you in the next video. Till then, take care. Bye bye.